London to Goa direct Air India flights begins under the bubble agreement. Boeing 787 flights to land weekly, and from November's second week, 2 flights will land and take off 2 times in a week. Onion rates skyrocket as rain hits the crop supply, touches 80 rupees per kilo. India has seen drop in daily COVID-19 cases for the consecutive 5th day in a row, with the active cases steadily declining since 2nd of October. Total cases reached 75.50 lakhs. Isaac Clinton D'Souza, and now the news in detail. The price of onions have skyrocketed once again. One pays almost 80 rupees per kilo, and all practical purposes is out of the reach of the common man. And this time, where the income coming into many families is drastically reduced or even stopped. This is what the situation is. Earlier the onion rates were around 50 rupees, now it is 80 rupees. At the horticulture department it was 44 rupees, it is now 65 rupees. The wholesale rate itself is 70 rupees. Vegetable vendors say that no onions are coming from Belgaum as well as Maharashtra markets, and the shortage is because of the rains. आम्ही कितें करतले आम्ही रिड्यूस कमी व्यवहार करतले नो कितें जालें हांव न्यूजान आयकल्लें की ते कर्नाटकान ते तांचे ते फसल पिड्यार जाला म्हणून ते रेट हाय जावपाचे आसा ते म्हाका कळ्ळें पयलींच कळ्ळें म्हणून हांवें थोडे स्टोर करून बी दवरला आणि बाकी आम्ही थोडे वापरपाचे आणि कितें करपाचें दॅट इज ओनली वे वी कैन सर्वाइव. प्याज की रेट क्या है बोले अभी? प्याज की रेट 75 किलो. टमाटर 50 रुपये किलो. और अभी और कुछ बढ़ने वाली है? और बढ़ने वाली है ना, कांदे का शॉर्टेज है ना. कांदा कितना होने वाला है? कांदा बोलने नहीं आता, वो कम हुआ नहीं बाहर से माल भी लाएगा ना, कम हो भी सकता है, ज़्यादा हो भी सकता है. ऐसा है जो हमारे हाथ में का नहीं ना. अच्छा, ये बारिश की वजह से ऐसा? बारिश की वजह से खेती पूरा पानी रुक के पूरा खराब हो गया है. ऐसा तो माल कहाँ से आता है? माल बेलगांव से आता, कोल्हापुर से आता. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panji Market. If people from Satri do not want IIT, then it is welcome in Sangay. There will be no issues here, MLA Prasad Gaonkar said on Monday. He said the site selection is very important for the IIT, but the locals should be taken into confidence, he added. The IIT proposed project in Melaulim has encountered a lot of opposition from the locals. Here's more. However, the government, not the official, did this, Sangam MLA Prasad Gaonkar said. He was speaking on the protest against IIT in Melaulim, taking up this issue as a new challenge. He said that 3 sites are available in Sangay. First site belongs to Revenue Department, second Forest Department, and third belongs to our society. I have agreed to hand over all 3 sites to government, he said. He also said that no major trees will be felled, no fields will be destroyed, and no one will oppose if the IIT project comes up in Sangay. हांव वेलकम करपाक रेडी आसा कित्याक आमचे ते ओपोज त्या प्रमाणान जाल्लो नाशिल्लो आनी जाल्यार म्हाजे कडेन 3 सायट आसा आनी त्यो गोवोरमेंटा सविस्तर मांडले कडेन आसा आनी थंय खंयच्याच परिस्थितीन लोकांक लुकसाण जावपाक की कांयच विशय येना म्हणजे शेती पाती कोणाक वचना झाडां मारपाचे मोठे प्रमाण प्रश्न येना सो हांव अजून वेलकम करता म्हाका कांय हरकत ना सेमान विचार करचो ताचेर. तुम्ही 3 सायडा ते खंय लँड कसले ते ना लँड कशी आसा आमची सरकाराची एक लँड आसा आमची डायरेक्ट क्लियर रेवन्यू डिपार्टमेंटाची एक लँड आसा एक आसा ती फॉरेस्टाची आसा पण ते झाडपेड कांयच ना टोटली अशी रॉकीपेड आसा आनी एक आसा ती आमची सोसायटीची आसा 3 जमनी आमी सरकाराक दिल्ल्यो सो 3 जमनीचे आनी एक फस्ट बी जमीन आमी सिलेक्ट केल्ली तातूंत ऑलमोस्ट फावंडेशन घालपाचो टायम आयिल्लो थोडेशे एक 2-3 जाण म्हणजे एन्क्रोचमेंट आसा तांकां सायडी काडपाचें आनी विशय काबार करपाक आशिल्लो पूण तेन्ना ते जालें ना म्हाका खबर ना ताचेर हांव कांय उलोवंक शकना त्या टायमाचेर ते जालें ना आनी तेणें अकस्मात एक खंयचे आमचे कॅबिनेट मिटींग जाली आनी तेणें सायड चेंज केली. गव्हर्मेंट हांव वेलकम करता म्हूण सांगलें गव्हर्मेंटान विचार कर कसलोच त्रास गव्हर्मेंटाक जावची ना सांग्याक IIT दिल्यार हेजी हमी हांव दिवंक शकता. आमी ताचेर IITचेर संपूर्ण अभ्यास केल्लो मनोहर भाई आसतना तेणी उतर दिल्लें की IIT ही आमकां सांग्यारच आमकां दितली म्हणून आनी त्या प्रमाणे सगळें काम ते जाल्लें फक्त मायनर थोडी गोश्टी आशिल्ल्यो लिटिगेशन आशिल्लें तें जर बसून तर अकॉर्डिंग टू म्हाजे दिसान CM आमचे CMान घेवन बसपाचें किंवा AG सर घेवन अशें रावंड कॉन्फरन्स बसले जाल्यार तो विशय सॉल्व जाता अशें म्हाका दिसता. लोकांना ओपोज कित्याक जाता तेजेर विचार करपाची गरज आसा. लोक ओपोज इतल्या खातीर जाता कारण आज यूथ मॅक्झिमम भायर सरले कडेन आसा प्रत्येक गोश्टीक आज ओपोज करतात
लोकांक येवपाचें आमी गव्हर्मेंटान खंय तरी लोकांक समजून घेवपाक जाय जेन्ना खंयचोय प्रोजेक्ट एका जाग्याचेर हाडटा तेन्ना सायट सिलेक्शन हें खूब इम्पॉर्टंट आसा आयज सायट सिलेक्शन बरोबर जायना ताका लागून खंय तरी प्रोजेक्ट्सां भितर हें जाता सायट सिलेक्शन जाल्या नंतर त्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची बी गरज आसा त्या गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवप जायना खंय तरी चुकता किंवा कमी पडटा आज ऑफिशियल्स म्हणा किंवा गव्हर्मेंट म्हणा तांणी कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय कॉन्फिडन्स घेतल्यान लोकांक समजता बाबा ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमकां फायदो कितें आसा किंवा नुकसाण कितें समजता इर्शाद शेख फोगवा 365 from Panaji. International flights have begun from Goa Dabolim International Airport. For the first direct Air India flight between Goa and London began on Sunday from the Dabolim International Airport. The flight services that are present on weekly basis will soon turn into bi-weekly services from November under the Air Bubble Agreement. Goa Dabolim International Airport Director Gagan Malik said that Air India started its direct flight from London to Goa, London, Boeing 787 initially once a week and then twice a week from November. Goa and London are connected directly now. An air bubble, a temporary arrangement between two countries aimed at restarting commercial passenger services with regular international flights are suspended as a result of the COVID-19 pandemic. देखिए अभी ना गोवा एयरपोर्ट से कल से एयर बबल अरेंजमेंट्स में डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हुई है जो लंदन गोवा लंदन ऑपरेट करेगी और ये फ्लाइट्स जो थी पहले आती थी वाया दिल्ली और इन फ्लाइट्स के केस में ये होता था कि वो फ्लाइट दिल्ली लैंड करती थी वहाँ पर वो पैसेंजर सारे डिबोर्ड किए जाते थे वहाँ से उनको दूसरे एयरक्राफ्ट में बिठाया जाता था और यहाँ लाया जाता था तो अभी ये डिसाइड किया गया है एयर इंडिया ने ये प्लान किया है कि ये डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी और अक्टूबर के महीने में ये वंस अ वीक ऑपरेट करेगी फ़्लाइट जो कि लंदन से सीधा गोवा आएगी गोवा से सीधा लंदन जाएगी उसका एक विजिबल एडवांटेज ये देखने को मिल रहा है कि कल जो फ्लाइट गई है उसमें 224 पैसेंजर्स यहाँ से गोवा से लंदन गए हैं और नवंबर के मंथ में जो फर्स्ट वीक है उसके फ्राइडे और संडे 2 दिन ये ऑपरेट किया करेगी तो अब बेसिकली लंदन के लिए हमारे पास जो डायरेक्ट कनेक्शन है ये मार्च तक इसी प्रोविज़न में ये फ़्लाइट ऑपरेट करेगी और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे पास हर महीने 8 डायरेक्ट फ़्लाइट्स लंदन गोवा लंदन होंगी जो कि जो गोवा की पब्लिक थी उसकी एक बड़ी डिमांड थी कि यहाँ से लंदन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट होनी चाहिए तो एयर इंडिया ने इस फ्लाइट को स्टार्ट किया है और The Union Ministry of Civil Aviation has entered into an air bubble agreement with multiple countries including Afghanistan, Bhutan, Bahrain, Canada, Germany, France, etc. as regular international flights are banned due to the COVID-19 pandemic. टूरिज्म सीज़न के बारे में तो ऑलरेडी जो बात चल रही है वो ये है कि क्योंकि गोवा में अब टूरिज़्म ओपन होता जा रहा है और भी ओपन हुआ है 2 दिन पहले ही शायद ऐसा डिसीजन गोवा गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है कि रिवर क्रूजेज़ और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को भी वो ओपन कर दिया गया है तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जैसे जैसे पैसेंजर्स के पास पहुंचेंगी जैसे जैसे ये उनकी जानकारी में आएगा तो गोवा में और अधिक पैसेंजर्स आना शुरू हुआ कल हमारे पास लगभग 6000 पैसेंजर का फुटफॉल था जो कि काफ़ी समय बाद इस स्थिति में हम आए हैं कि हमारे पास संडे को अराउंड 29 फ़्लाइट्स थी और 6000 के करीब पैसेंजर्स गए थे मतलब गए और आए थे यहाँ से गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अभी विंटर शेड्यूल जो हमारा 24-25 तारीख से शुरू होगा उसमें इंडिगो भी अपनी 6 फ्लाइट्स लेके आ रहा है और उसमें 4 नए डेस्टिनेशंस भी कवर होंगे जिसमें चेन्नई भी जुड़ेगा नागपुर भी जुड़ेगा लखनऊ भी जुड़ेगा और एयर एशिया भी अपनी 3 फ्लाइट्स बढ़ा रहा है विस्तारा भी अपनी 2-3 फ्लाइट्स को बढ़ा रहा है फ्रीक्वेंसी फ़्लाइट्स की जो पहले थी वो बढ़ती जा रही है और दिल्ली के लिए आज की तारीख में हमारे पास 5 फ्लाइट्स हैं बॉम्बे के लिए हमारे पास 6 फ्लाइट्स हैं हैदराबाद वगैरह के लिए हमारे पास 3 फ्लाइट्स हैं ये चीज़ें धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि सिविल एविएशन पे लोगों का भरोसा है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों का भरोसा है यहाँ की जो सैनिटाइजेशन है यहाँ पे जो सेफ्टी हम प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स के आने वाले पैसेंजर्स के लिए जाने वाले पैसेंजर्स के लिए जिसमें गोवा गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है स्पेशली जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए तो चीज़ें अब बीट हैं चीज़ें ग्राफ इज राइजिंग हाई. It is Hiru Mahale for Goa 365 at the Dabolim International Airport. We will take a short break. Please stay with us.
Welcome back. A private player should be roped into a harvest sugarcane, bringing it to the factory and convert it into sugar. The administrative process should be looked into and onto by the government. And with these strategies, the Sanjeevani Sugar Factory could start by this year, says Sangay MLA Prasad Gaonkar on Monday. The Sangay MLA, along with the sugarcane farmers, met Chief Minister Pramod Sawant and submitted this proposal. However, Chief Minister was not in favor of this proposal, saying he has better plans, Prasad said. Prasad said he has started a discussion with sugarcane farmers and other stakeholders for past 1 month on restarting the sugar factory. Listen to what he has to say. गेल्ले एक म्हयनोभर आमी ताजे डिटेल सगळे स्टडी केल्या आनी एक 2-3 एजन्सीक मेळून जालें म्हगेलें आनी तातूंतल्यान एक हांवें वायबल एजन्सी आसा आमी हांगा तळमकार हाडिल्ली. आमचो विशय असो आशिल्लो की गव्हर्मेंटाक इनवॉल्व करून घेवन जे एक प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक दिल्लें की शुगर म्हणजे ऊस आमी हाडून बेल्टर घालतलो, बेल्टर घातल्या नंतर ती साखर जावं पर्यंत म्हणजे शुगर केन साकून साखर जावं पर्यंत ही जबाबदारी पळय कितें आसा ती आमगे टोटली त्या एजन्सीन घेवपाची आनी बाकीचें एडमिनिस्ट्रेशन कितें आसा तें आमच्या गव्हर्मेंटान पळोवपाचें. अशे पद्दतीचें एक प्रपोजल आमी करून दिल्लें आनी म्हाका दिसता सादारण एक 3 ते 4 वर्सांनी हे प्रपोजल फाटलो बॅकलॉग जो सोडलो फाटलो जर आमी लोनाचो विशय सोडलो फॅक्टरीचो नव्यान तर आमी थोडी इन्वेस्टमेंट केली जाय जाल्यार फुडले 3 ते 4 वर्सां भितर हो आमी कारखानो काय फायदेशीर आमी हाडूंक शकता. हे पद्दतीचें प्रपोजल आमी सरकाराक दिल्ले कडेन आशिल्लें ताजेर तांणी विचार करता म्हण सांगला पूण तांणीय एक विशय मांडला की आमी जो विशय आसा तो टोटली आउटसोर्सीस करपाक पळयता म्हणजे जणू फुडल्या एक 3-4 वर्सां भितर आरकेव्हीच्या अंडर हो जो कारखानो आसा तो आमी पूर्ण नवो करतले आनी त्याच बरोबर तेजी पळय कितें जबाबदारी आसा टोटली खंय तरी एका कंपनीक आमी लीज आउट करतले असो तांचो विशय आतां सद्या चलता. जो आमी विशय दिल्ला त्या विशयाचेर खंय तरी तांचें मातशें दुमत आसा. सो लेट्स पळोवया आतां कशें गव्हर्मेंट कशें वर्कआउट करता कित्याक हांव तें सांगूं शकता की जें प्रपोजल आमी दिल्ले कडेन आसा तें शेतकाराचे फायदेशीर गोंयाक शेतकार कमी जावपाक जायना उसाचे दृश्टीच्यान फायदेशीर आसा प्लस बाकीची गोश्टी ज्यो आसा म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट जो आसा तो थोडो चेंजीस करपाक जाय. आयज थंय भरपूर स्टाफ म्हणजे वाडलेलो कडेन आसा थोडो स्टाफ सगळो म्हणजे हें जाल्ले कडेन आसा ऑलमोस्ट रिटायरमेंट जावपाक पावले कडेन आसा. सो हे सगळे जर चेंजीस केल्यो आनी फॅक्टरीक जर मिनिमम कितें पळय आमची घालपाचें कॅपिटल शेअर पळय कितें घालपाक तो घातलो जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी ती फायदेशीर करतले. आमच्या प्लॅनांनी आसा ती मशिनरी घेवन म्हळ्यार तातूंत थोडे चेंजीस करपाक पडटले. हांव अशें म्हणना की तातूंत थोडे चेंजीस करता ते चेंजीस केले नंतरच आमची फॅक्टरी तातूंत चलूंक शकता. कंप्लीट नवी करपाची सरकाराचो विशय आसा ती टोटली नवो करचो आनी नवा कॉन्ट्रॅक्ट दिवचो अशें म्हणटा पूण तें जावपाक फुडलीं 3 ते 4 वर्सां वतलीं जर तशे पद्दतीन आमी विचार केले जाल्यार म्हणजे ज्या प्रमाणे ते प्लॅन आउट करता त्या प्रमाणे 3 ते 4 वर्सां वतलीं. सो शेतकाराक तितलो थिंगा कितें डिली उरपाक न्ही. सो ताका लागून आमी विशय दिल्लो की आतां हें करया अशें म्हणजे तांकां स्टार्टींग कॉस्टींग पळय आसा तो घालचो पडटलो पळय हाजी तुका डिटेल सगळें दिल्ले कडेन आसा. ना पण तुम्ही सीएमान तुमकां कितें टायम लिमीट दिला टायम दी आमकां कितें म्हटलं ना पूण हांगा आयल्या नंतर कॉन्सेप्ट चेंज जाला थोडो म्हणजे सीएम म्हणटा आपल्या अशे पद्दतीन वचपाचें ना सरकाराक ह्या पद्दतीन म्हणजे जे आमी प्रपोजल दिला त्या पद्दतीन वचपाचें ना. Irshad Sheikh Fogwa 365 from Panaji. Looks like coronavirus curve is flattening in India. The country has seen a drop of daily COVID-19 cases for the consecutive 5th day in a row. The active cases are steadily declining since the October 2nd, with India reporting more than COVID-19 recovered patients than daily cases since 21st of September. The cases have reached to 75.50 lakhs as of now. A single day jump of 55,722 COVID-19 cases were reported in India. In last 24 hours, 579 deaths were reported and 66,399 patients have recovered. India has reported 75,50,273 COVID-19 positive cases till date, and the active cases stands at 7.72 lakh. 1,14,610 deaths are reported and 66,63,608 patients have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 15.95 lakh mark of COVID-19 cases, followed by Andhra Pradesh 7.83 lakh, Karnataka 7.65 lakh, Tamil Nadu 6.87 lakh and UP 4.55 lakh. More than 3 lakh cases were reported worldwide in single day. The global cases have reached 4 crore, 11.14 lakh deaths are reported and 3 crore have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus nations. United States is leading with more than 79.66 lakh cases, followed by second worst hit nation India 75.50 lakh cases, Brazil 52 lakh cases, Russia 13.88 lakh cases and Argentina with 9.65 lakh cases. Bureau Report Goa 365. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back.
In a drug raid, Perne police seized charas, ganja and marijuana plants worth 1 crore rupees and arrested 3 in Thorleban in Keri. PI Jiva Talvi of the Perne police station said that the police received information about the illegal drug activities being carried out in a residence at Perne, Keri, Goa. The team raided a premises at Thorleban, Keri, during which 2.9 kg of cannabis plants worth 5 lakh rupees was seized along with 1.327 kgs of ganja worth 1,30,000 rupees and 2.556 grams of charas worth about 1 crore 2 lakhs rupees was seized in the Panchanama, and 3 have been taken into custody. An offence under section 20A/I of 20B and 20BC read with section 29 of NDPS Act have been registered at the Perne police station, and 3 persons, namely the 22-year-old Rama Kerkar, 44-year-old Rashmi Kerkar and 34-year-old Shivaji Kerkar were arrested. Sandeep Kamulkar for Goa 365 in Perne. And here is some news about the weather. Squally weather with the wind speed reaching 40 to 50 kilometers per hour are likely to prevail along the South Maharashtra Goan coast on the 21st, 22nd and the 23rd of October. The fishermen are, however, advised not to venture into these areas during above the period. The state has been seeing some dry and hot spells for the past couple of days, especially during daytime. Goa 365 Bureau. And now for some sports news. Unchi boys Ribanda defeated FC Divar 1-0 via the tiebreaker to emerge the champions at the second All-Goa five-a-side football tournament organized by FC Divar on Sunday. The tournament was held on 2 consecutive Sundays, which saw around 64 teams battle it out for the title. It was a hard, tough victory for Unchi boys as they were locked into a goalless draw at the final whistle. However, they made the most of the penalty shootouts and defeated the host by 1-0. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please do log in into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook at Goa365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV or simply download the app on both on Android and your iPhones to watch it on mobile phones. Until then, keep watching Goa365.